बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.3 with database 18c pluggable in Windows 10 InshaAllah। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.3 को डेटाबेस 18c प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। क्रिएट फोल्डर इन a C drive with the name 18c_21.2 and under this folder we further create two folder with the name db and ords। C drive के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे 18c_21.2 के नाम का, और इस फोल्डर के अंदर मज़ीद दो फोल्डर बनाएंगे db और ords के नाम का। Unzip Oracle Database 18c in db folder which we just created under 18c_21.2 folder। अब हम Oracle Database 18c को एक्सट्रैक्ट करेंगे db के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है 18c_21.2 के फोल्डर के अंदर। Unzip ORDS 21.3 in a folder ORDS। which is under 18c_21.2 folder, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब ORDS 21.3 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो कि 18c_21.2 के फोल्डर के अंदर है। Download Oracle Apex through this link। However, we have already downloaded। अब हम Oracle Apex 21.2 को इस लिंक के ज़रिए से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने पहले ही उसको डाउनलोड कर लिया है। Unzip Apex 21.2 in a folder 18c_21.2, so we do not need to copy and paste Apex folder। अब हम Apex के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 18c_21.2 के फोल्डर के अंदर, तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चिस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और जावा का वर्जन देखेंगे। द जावा वर्जन विच वी आर यूजिंग इज जावा 8 अपडेट 211। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जावा 8 अपडेट 211 है। Now it will take time, so I have to pause it। अब ये टाइम लेगा तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। अब हम डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। Option will be create and configure a single instance database। Hit next button। ऑप्शन क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर अ सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस का रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबाएं।
ऑप्शन विल बी डेस्कटॉप क्लास, हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डेस्कटॉप क्लास रहेगा, नेक्स्ट का बटन दबाएं। ऑप्शन विल बी यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट, यू कैन यूज अदर ऑप्शन एज वेल, हिट नेक्स्ट बटन। यूज विंडोज बिल्ट-इन अकाउंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट का बटन दबाएं, यस। असाइन ग्लोबल डेटाबेस नेम, password, confirm password and pluggable database name from your choice and hit next button. Global database name देंगे, password देंगे, confirm password देंगे और pluggable database का नाम देंगे अपनी मर्जी से और next का बटन दबाएंगे। Now hit install बटन, अब install का बटन दबाएंगे। Now it will take time, so I have to pause it. अभी टाइम लेगा, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। Oracle Database 18c has installed. Hit close बटन, Oracle Database 18c जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज का बटन दबा दें। Open SQL Plus, connect with SysDB। SQL Plus खोलेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे SysDB से। Check SGA maximum size by running show parameter SGA command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it by running this command. अब हम show parameter SGA की कमांड चलाएंगे और SGA maximum size पता करेंगे। अगर 3000 MB से कम होगा तो हम उसको बढ़ाएंगे, तो ये 3000 MB से कम है तो हम इसको बढ़ा रहे हैं। It is less than 3000 MB. Now we are increasing it. Or check pluggable database status by running this command. If it is in read-write mode, then we will save its state by running this command. The advantage of saving state is that when we shut down database and start it again so its state will remain unchanged, means it is still in read-write mode. अब हम ये कमांड चलाएंगे प्लगेबल डेटाबेस का स्टेटस चेक करने के लिए। अगर वो रीड-राइट मोड में होगा तो हम उसकी स्टेट को महफूज कर देंगे ये कमांड चला के। स्टेट को महफूज करने का फायदा ये होता है कि जब हम डेटाबेस को बंद करेंगे और उसको दोबारा चलाएंगे तो उसकी स्टेट जो है वो महफूज रहेगी, यानी कि वो रीड-राइट मोड में ही रहेगा। In case if it is not in read-write mode, then we will change its mode into read-write mode first and then save its state. बिलफर्ज अगर ये रीड-राइट मोड में नहीं होता तो पहले हम इसको रीड-राइट मोड में लेके आते और फिर इसकी स्टेट को महफूज करते। नाउ शट डाउन डेटाबेस बाय रनिंग शट इमीडिएट कमांड। अब हम डेटाबेस को बंद करेंगे शट इमीडिएट की कमांड चला के। नाउ स्टार्ट डेटाबेस बाय रनिंग स्टार्टअप कमांड। अब हम डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप की कमांड चला के। Now we will check SGA maximum size again
by running show parameter sga command in order to make sure that the changes we did has reflected or not. अब हम दोबारा sga मैक्सिमम साइज पता करेंगे शो पैरामीटर sga की कमांड चला के, ताकि ये तसल्ली कर ले कि जो तब्दीली हमने की है वो हो गई है या नहीं। तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है। The changes we did as reflected. Exit SQL plus को बंद कर दें। Open command prompt and reach where apex folder is available. कमांड prompt खोलेंगे और वहां जाएंगे जहां apex का फोल्डर मौजूद है। Run this command. अब ये कमांड चलाएंगे SQL plus space /no-log connect with sysdba, कनेक्ट होंगे sysdba से। Run this command show pdbs. We will run this command before every apex script to make sure that we connect with pluggable database or not. If we connect it, then we can run apex script. If not, then we have to connect it while running this command and then run apex script. And when we are connecting with a pluggable database, so we make sure that session altered appeared. If not, then we have to connect with sysuser again. अब हम show pdbs की कमांड चलाएंगे। ये कमांड हम तमाम एपेक्स के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि ये तसल्ली कर लें कि हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हैं तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चला लेंगे। तो हम एपेक्स का स्क्रिप्ट चला लेंगे। लेकिन अगर हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट होंगे और फिर एपेक्स का स्क्रिप्ट चलाएंगे। और जब हम प्लगेबल डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर्ड लिखा हुआ आ गया। Now we will install apex by running this command. अब हम apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Now we will run this command. Username will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दीजिएगा। यूजर जो है वो एडमिन होगा। Oracle Apex 21.2 as installed. Oracle Apex 21.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Now we will run this command with the sysuser और make sure that we connect with sysuser. अब हम ये कमांड चलाएंगे और ये तसल्ली कर लेंगे कि हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं। So we connect with the sysuser. हम sys के यूजर से कनेक्ट हैं। Now run this command and provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे। पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से। Exit this command prompt. इस कमांड prompt को बंद कर दें। Open command prompt again with administrator rights. अब हम command prompt खोलेंगे administrator के राइट से
और वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है and reach where ORDS folder is available. Now run this command. अब ये कमांड चलाएंगे. Now provide a configuration path where we want to configure ORDS and hit enter button. अब हम configuration path देंगे जहाँ पे हम ORDS को configure करना चाहते हैं और enter का बटन दबाएंगे. Now option will be 1, hit enter button. Option 1 रहेगा, enter का बटन दबाएं. Option will be localhost, hit enter button. Option localhost रहेगा, enter का बटन दबाएं. Now provide your port. If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then type your port number and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबाते हैं. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो वो पोर्ट नंबर लिख के फिर एंटर का बटन दबाएं. My port is 1521. मेरी पोर्ट 1521 है. To find your port, come to Oracle ORDB 18 Home 1. Navigate it. अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle ORDB 18 Home 1 में आए, इसको खोलें. Come to Net Manager, open it. Net Manager पे आए, उसको खोल लें. Here option will be 1, hit enter button. यहाँ पे option 1 रहेगा, enter का बटन दबाएं. Now provide your pluggable database name because we have installed pluggable database. अब यहाँ पे हम pluggable database का नाम देंगे क्योंकि हमने pluggable database इंस्टॉल किया. Option will be 1, hit enter button. Option 1 रहेगा, enter का बटन दबाएं. Now provide password and confirm password for ORDS public user from your choice. Password और confirm password देंगे ORDS public user को अपनी मर्जी से. Now enter administrator username which will be sys. Administrator username लिखेंगे जो कि sys होगा. पासवर्ड और confirm password दे दें अपनी मर्जी से. Provide password and confirm password from your choice. Option will be sysox, hit enter button. Option sysox रहेगा, enter का बटन दबाएं. Option will be temp, hit enter button. Option temp रहेगा, enter का बटन दबाएं. Option will be sysox, hit enter button. Option sysox रहेगा, enter का बटन दबाएं. Option will be temp, hit enter button. Option temp रहेगा, enter का बटन दबाएं. Option will be 1, hit enter button. Option 1 रहेगा, enter का बटन दबाएं. Option will be Apex public user, hit enter button. Option Apex public user रहेगा, enter का बटन दबाएं. Now provide password and confirm password for Apex public user from your choice. Password और confirm password देंगे Apex public user को अपनी मर्जी से. Option will be 1, hit enter button. Provide password and confirm password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. Option 1 रहेगा, enter का बटन दबाएं. पासवर्ड और confirm password दे दें Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से.
ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Now come to Apex installation folder, copy images folder from there। अब हम Apex के installation folder में आएंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे images के folder को। एंड पेस्ट इट टू दिस पाथ, और उसको इस जगह पे चिस्पा कर देंगे, इस पते पे। नाउ ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। Now provide a path to Apex static resource location till images folder। अब हम Apex static resource location को बता देंगे images के folder तक का। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन, ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबाएं। नाउ डिफाइन पोर्ट फ्रॉम योर चॉइस और लीव इट एज इट इज। आप पोर्ट दे दें अपनी मर्जी से या इसको ऐसे ही रहने दें। When Oracle REST data services initialize a pair, we can access Oracle Apex 21.2। जब Oracle REST Data Services Initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल कर सकते हैं। However, do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.2। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा, क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 21.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हम इसको दोबारा खोल सकते हैं, we can reopen it as well। Open command prompt with administrator rights and command prompt खोलेंगे administrator के राइट से, वहाँ जाएंगे जहाँ ORDS का फोल्डर मौजूद है and reach where ORDS folder is available। And when we reach there, this command, और जब हम वहाँ पहुँच जाए तो फिर ये कमांड चलाएंगे। Oracle Apex 21.2 and ORDS 21.3 with database 18C pluggable has installed in Windows 10। Oracle Apex 21.2 और ORDS 21.3 database 18C pluggable के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।